You know, every nation has a story about how it came to be, right? A moment where it truly defined itself. Well, for India, that story is written in its constitution. But this wasn't just some legal document that appeared out of nowhere. No, it was a quest, a powerful declaration, and a massive promise. So let's dive into this incredible journey of how India's founding document was actually made. Okay, so we all know January 26th. It's Republic Day! Parades, celebrations, the whole thing. But have you ever stopped to ask, why that date? I mean, it seems a little random, doesn't it? Well, the real answer isn't found in 1950. To get it, we have to rewind the clock back to a powerful call for freedom that really set the stage for everything that was to come. So, before we can even talk about the Constitution, we've got to understand the dream that made it so necessary in the first place. The dream of a truly, completely independent India, one that was finally free to decide its own destiny. Let's picture it. It's the late 1920s, and patience with British rule is running seriously thin. The British were offering something called dominion status, which was kind of like self-governance, but you'd still be under the British crown. For a new, assertive generation of leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, that just wasn't going to cut it anymore. They were done with half measures. They wanted something absolute. And that demand got a name: Purna Swaraj. It literally means complete independence. So in this landmark session in December 1929, the Indian National Congress made it official. This was their goal now. And they made a declaration. From now on, January 26, 1930, will be celebrated as Independence Day, a day to pledge themselves to the fight for total freedom. Now remember that date, January 26th. It's going to be super important later on. Okay, so the goal is set: complete independence. What's the next step? Well, you need a rule book for this new nation you're building. But who's going to write it? Let's meet the architects of modern India, the Constituent Assembly. And listen, this was not a small committee. We're talking about 299 members. These people were given one of the most monumental tasks in modern history, drafting the Constitution for a brand new, independent India. And these members weren't just a bunch of politicians. They were truly a snapshot of the entire nation. People called them the best brains of India, and for good reason. The assembly had national heroes, brilliant legal minds, but what's really crucial is that it was designed to represent all of India's diverse communities. The members were chosen through indirect elections just to make sure that a whole range of voices were in that room. And wow, this was not a quick job. The assembly got elected back in July 1946. They had their first meeting in December of that year. And for nearly 3 years, they debated, they argued, they discussed, and they drafted every single line. Finally, on November 26, 1949, the Constitution was passed and adopted. But wait a second. Look at that last date. It wasn't actually enforced for another 2 months. Why? We'll get to that in a minute. But before we go any further, we have to look at the absolute heart of the Constitution. You could call it its soul. This is the Preamble, and it's basically the entire philosophy on which the nation is built. You know, the Preamble reads almost like a poem about democracy. It's the introduction that lays out all the core values and the main goals. Every single word in here was chosen so deliberately, and it's packed with meaning. So let's break down some of the key promises that it makes. First up, sovereign. This was the ultimate prize, the direct answer to that call for Purna Swaraj. This word declared that India was finally its own boss. After centuries of foreign rule, the people of India, through their own government, would have the absolute final say on everything. No outside power could ever tell them what to do again. Next, socialist. Now this is all about economic justice. For a country just coming out of colonial rule, where so much wealth had been taken away, this was a radical promise. The idea was simple. Resources are created by society, so the government has a duty to make sure they're shared, to help close those massive gaps between the rich and poor that colonialism left behind. Then there's secular. And honestly, in the painful aftermath of partition, this might have been the most difficult and the most important promise of all. It guarantees every single citizen the freedom to follow any faith they choose, or none at all. But it goes deeper. It says the state, the government itself, is neutral. It doesn't have an official religion, and it has to treat every single faith with equal respect. It was a foundational idea for holding such a diverse country together. Democratic. Okay, this one might seem a little obvious, but what it means here is so profound.
It's not just about getting to vote every few years, it's a guarantee of equal political rights and, this is the critical part, the power to hold your leaders accountable. After generations of just being subjects of an empire, Indians were now citizens. They were the ultimate source of all political power. And finally, republic. This kind of locks in that whole democratic idea. It's the final definitive break from the past, not just from the British monarchy, but from India's own long history of kings and emperors. It means the highest office in the land, the head of state, is a position you earn through an election, not something you're born into. Okay, so we've got this amazing, finished constitution. But that brings us right back to that little puzzle on the timeline. Why the 2-month gap? Why was it adopted on one day but only came into force later? So here's the big reveal. The Constitution was officially done, passed and adopted on November 26, 1949. The work was finished. But the Assembly members, they made a very deliberate, very symbolic choice. They waited until January 26, 1950 to bring it into full effect. Why? To honor that original pledge for Purna Swaraj that was made exactly 2 decades earlier. It was their way of connecting the two moments, making the dream of 1930 the reality of 1950. You see, this whole quest, from a dream of freedom to this incredibly detailed rulebook, it wasn't just for the people back in the 1950s. It was meant to be a promise to all future generations of Indians. And that brings us to the most fundamental, most powerful idea of all, captured right there in the Preamble's opening words. This Constitution doesn't come from a king or a foreign power or even from the smart people in the Assembly themselves. The ultimate authority is we, the people. It's a document created by the people, for the people. And that really leaves us with a final, powerful question to think about. This Constitution wasn't a gift handed down to us. It's a promise that we as a people made to ourselves and to each other. So what does it truly mean to live up to that promise today? What does it mean for us to constantly adopt, enact, and give this Constitution to ourselves every single day? चलिए आज समझते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान यानी भारत का संविधान आखिर बना कैसे। देखिए, ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक कहानी है, एक वादे की कहानी। तो जरा गहराई से देखते हैं इसे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल की शुरुआत है। ये एक बहुत बड़ा वादा था जो एक नए देश के लोगों से किया गया था। एक ऐसा वादा जो हर किसी को न्याय, आज़ादी और बराबरी की गारंटी देता है। पता है, प्रिएम्बल को अक्सर हमारे संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये वो सोच है, वो फिलॉसफी है जिस पर हमारा पूरा का पूरा संविधान टिका हुआ है। ये हमें बताता है कि संविधान बनाने वाले आखिर कैसा भारत बनाना चाहते थे। चलिए, इसके कुछ खास शब्दों का मतलब समझते हैं। तो सबसे पहला शब्द है सॉवरेन या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि भारत अपने हर फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है, चाहे वो देश के अंदर के मामले हो या बाहर के। असली शक्ति भारत के लोगों के हाथ में है। फिर आता है सेक्युलर यानी पंथनिरपेक्ष। इसका मतलब ये है कि सरकार या देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सभी को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है और सरकार किसी के साथ भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। और हाँ, डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्रात्मक। ये वो वादा है कि सरकार लोगों की होगी, लोगों के लिए होगी। लोगों को ये हक होगा कि वो अपने नेता खुद चुने और उनसे सवाल भी करें। ये असल में लोगों की ताकत का जश्न है। लेकिन सवाल ये है कि ये इतना बड़ा, इतना पावरफुल वादा ये आया कहाँ से? ये कोई एक दिन में आया हुआ विचार नहीं था, नहीं। इसके पीछे दशकों का संघर्ष और आज़ादी की एक ज़बरदस्त चाहत थी। देखिए, अपना संविधान बनाने का जो आइडिया था ना, वो हमारी आज़ादी की लड़ाई से ही निकला था। ये लड़ाई सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ादी की नहीं थी, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखने के हक की लड़ाई थी। इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया दिसंबर 1929 में। कांग्रेस के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। मतलब अब लक्ष्य सिर्फ थोड़े और अधिकार पाना नहीं था, बल्कि पूरी तरह से आज़ादी हासिल करना था। और इस ऐलान को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया गया।
ये एक सिंबल बन गया जिसने लाखों लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए इंस्पायर किया। हाँ, इस तारीख को याद रखिएगा, ये आगे बहुत काम आने वाली है। तो ठीक है, पूर्ण स्वराज का सपना तो देख लिया, पर इस सपने को एक असली रिटन डॉक्यूमेंट में कैसे बदला जाए? एक ऐसी किताब जो करोड़ों लोगों के भविष्य को रास्ता दिखाए। यहीं पर एंट्री होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो इस बहुत बड़े काम के लिए बनाई गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इसमें थे 299 सदस्य। ये सदस्य भारत के अलग-अलग कोनों, समुदायों और विचारधाराओं से आए थे। संविधान बनाने का ये जो प्रोसेस था, ये कोई छोटा-मोटा काम नहीं था। ये एक लंबा सफर था जो भारत की आज़ादी से भी पहले शुरू हो गया था। करीब-करीब 3 साल तक एक-एक क्लॉज पर, एक-एक आर्टिकल पर जमकर बहस हुई। अच्छा, अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे संविधान से जुड़ी 2 बहुत जरूरी तारीखें हैं, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। मतलब एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर 2-2 जरूरी तारीखें क्यों? इसका जवाब भी हमारे इतिहास में ही छिपा है। तो फर्क ये है, 26 नवंबर 1949 वो दिन था जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। असेंबली ने उसे अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया, पर इसे पूरी तरह से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो एक है अडॉप्शन की तारीख और दूसरी है एनफोर्समेंट की। और यहीं पर कहानी में वापस आती है 1930 की वो तारीख। हमारे लीडर्स ने जानबूझकर संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना, ताकि 1930 में लिए गए पूर्ण स्वराज के उस संकल्प को हमेशा के लिए सम्मान दिया जा सके। ये एक बहुत पावरफुल सिंबॉलिक जेस्चर था। और बस उस दिन 26 जनवरी 1950 को भारत ऑफिशियली एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। सालों का संघर्ष, इतनी मेहनत आखिरकार रंग लाई। तो इस तरह से जब संविधान लागू हुआ तो वो वादा भी पूरा हुआ जो प्रियम्बल में किया गया था। भारत ने अपने भविष्य की कमान पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। तो अब जब हम प्रियम्बल को दोबारा देखते हैं ना, तो वो सिर्फ एक वादा नहीं लगता, बल्कि वो उस देश की पहचान लगता है जिसे हमने हासिल किया। ये वो गाइडिंग स्पिरिट है जो आज भी हमारे देश के कानून को रास्ता दिखाती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, 70 साल से भी पहले लिखे गए ये शब्द सॉवरेन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, आज के भारत के लिए इनकी क्या मायने हैं और ये हमारे आज और आने वाले कल को कैसे शेप करते हैं।